Hello everyone, a warm welcome to all of you in the today's session on EduTap, and I'm your mentor Devanshu. I will be taking your ESI Current Affairs for the month of April 2022. So guys, once again a warm welcome to all of you in the live practice session series for the NABARD Grade A exam 2022, and today we will be covering the ESI Current Affairs for the month of April 2022. So guys, before beginning the session, if I'm audible and visible to you, all of you are requested to give a thumbs up in the comment section so that we can begin this particular session. So guys, please tell me if I am audible and visible. Please give a thumbs up in the comment section so that we can begin this particular session. So good evening Nilesh, good evening Abhishek. I really believe that all of you are really preparing well for a NABARD Grade A exam. And guys, as you all know, that live practice session series we have brought up for the NABARD Grade A exam, and till now we have covered the ESI Current Affairs for the month of May as well as June 2022, and today we will be covering up the ESI Current Affairs for the month of April 2022. But before beginning the session, I would like to show you the schedule. As you all know that the first 6 sessions of this particular series will be on the YouTube, and apart from that the rest of the sessions will be only for the enrolled students, the students who have enrolled for our courses. So I hope that this thing is very much clear to all of you. This basically initiative started from 22nd July, and it will go on till 4th of September 2022, in which we will be covering all the merit as well as non-merit sections. So I hope that this point is very much clear. So guys, apart from that, I would like to tell you here that if you are new to our YouTube channel, kindly subscribe it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. And you can also join our Telegram channel to get the access to the PDF of these sessions. See guys, if you are new to our YouTube channel, kindly subscribe it and also join our Telegram channel, क्योंकि जितनी भी PDFs हैं इन सभी sessions की, you are going to get it on the Telegram channel only. तो उसका एक्सेस के लिए आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल. सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. सो बिफोर बिगिनिंग द सेशन, वंस अगेन देयर इज अ स्मॉल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल ऑफ यू दैट if see guys, when you will be answering the questions, what you are required to do, you are required to first of all place the question number and then the option that you think is the right answer as per you. So let's begin with the very first question of our today's session. And the very first question is here on your screen. So the very first question is basically about the COVID Warriors. A program was being launched for the COVID Warriors. So please tell me that which one of the following ministries has launched this particular program. The name of the program is a customized crash course program for the COVID Warriors. So please tell me what is the name of the ministry. It's Education, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Ministry of Science and Technology, or the MOSPI. See guys, once again I am telling you, always focus on the keywords. और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इसको गलत अटेम्प्ट कर सकते हैं. So I am getting the right answers. So Sadashiv, Seema, agree, everybody is saying that option 3 is the right answer, and that is absolutely right guys. The right answer is Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So basically under this initiative, what they will be doing, they will be training 1 lakh COVID warriors, and this training will be offered for a period of 6 customized healthcare job roles. So I hope that this is very much clear to all of you. Let's move on to the next question. So guys, now the next question is on the maternal mortality rate, one of the parameter which is being used and which is being used across various dimensions in order for the policy making as well as to determine that what exactly is the new criteria. So जब हम बात करते हैं गाइस ये स्पेशल बुलेटिन जो कि लॉन्च किया गया था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर, तो आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी एंटिटीज ने इस पर्टिकुलर पार्ट को लॉन्च किया था. इज इट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नीति आयोग, Ministry of Health and Family Welfare, or the National Sample Survey Office? So let's see who will answer the question correctly. So the people are opting basically the option number A as the right answer, and guys that is absolutely right. The right answer is Registrar General of India, which has released the special bulletin on the maternal mortality rate. So guys, इन सभी जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे maternal mortality rate, infant mortality rate, तो इनकी यहाँ तक आपको डेफिनेशंस भी याद रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर. So let's move on to the next question. So the next question is National Commission for the Protection of Child Rights.
उन्होंने रिसेंटली डेटा रिलीज किया था स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर, उनके आइडेंटिफिकेशन और रिहेबिलिटेशन के ऊपर। तो बेसिकली आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा वो पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है, उसको डेवलप किया गया है टू ट्रैक एंड रिहेबिलिटेट द चिल्ड्रन। So please tell me basically in the question number 3 the name of the portal, and I am going to give you a small hint that we have already covered this portal in detail in our previous session of the June as well as May. So guys, please tell me what is the right answer. Question number 3, absolutely right. The right answer is Bal Swaraj portal, that is the option number 5. तो बाल स्वराज पोर्टल के ऊपर हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस के अंदर, एंड स्टिल इफ यू डोंट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पार्ट, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि जो वेब पोर्टल है बाल स्वराज, इट हैज बीन मेड फॉर द स्ट्रीट चिल्ड्रन। अब इसमें क्या होगा गाइस, जो भी चिल्ड्रन है जो स्ट्रीट पर रहते हैं तो उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर अपलोड की जाएगी और उसके थ्रू उसको ट्रैक किया जाएगा और यहाँ पर वर्क किया जाएगा उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए। और टिल नाउ वेरी वेरी अलार्मिंग नंबर्स आर बीइंग मेंशन्ड दैट 15 से 20 लाख चिल्ड्रन ऐसे हैं जो स्ट्रीट्स पर रहते हैं, और उसमें से अभी तक 20,000 स्ट्रीट चिल्ड्रन को रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा जा चुका है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेटा दैट यू मस्ट रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द मोबाइल Seva App Store, and in this question what you are required to do, you are required to identify the correct statement in relation with the mobile Seva App Store. So please tell me that what is the right answer. Quickly go through all these particular statements जो भी यहाँ पर mentioned है, and please tell me that what exactly is the right answer to this particular question. The very first statement says that it was launched by the Ministry of Electronics and Information Technology in year 2011. See, I always tell you, always focus on the keywords. कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, मिनिस्ट्री का नाम हो सकता है, ईयर हो सकता है, कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं, कुछ फैक्ट्स हो सकती हैं, कुछ फिगर्स हो सकते हैं, किसी की परसेंटेज दी जा हो सकती है। सो गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, द राइट आंसर इज दिस पर्टिकुलरली, दैट इज It was launched by the Ministry of Electronics and Information Technology. तो guys यहाँ पर देख सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं about the mobile Seva App Store, which is India's first indigenous developed app store. इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया था ईयर 2011 के अंदर। ये इनिशिएटिव किसका है? इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसको इंप्लीमेंट कौन करता है? इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय सीडीएसी। ऑब्जेक्टिव्स है टू प्रोवाइड गवर्नमेंट and public services apps on a trusted environment. One stop store मिलेगा यहाँ पर सभी को. So these are the important features that you must remember about the mobile Seva App Store, and I hope that this is clear to all of you. Let's move on to the next question. So guys, here the next question is about the International Monetary Fund. तो International Monetary Fund ने recently एक trust launch किया था to help the low income and the vulnerable middle income countries, ताकि वो जो पेंडेमिक जैसे चैलेंजेस हैं और जो क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस हैं उनके साथ बेसिकली अच्छे से उनको फेस कर सके. सो यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू टेल मी दैट व्हाट एग्जैक्टली द नेम ऑफ दैट ट्रस्ट इज ऑल अबाउट. So please tell me that what exactly is the right answer. Here the option 1 is Sustainable Development Trust, Climate Resilience Trust, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट. सी गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. यहाँ पर जो ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसा कोई ट्रस्ट बनाया जाता है टू हेल्प दीज काइंड ऑफ कंट्रीज हु आर ऑलरेडी वनरेबल, एंड ताकि वो अपने आने वाले चैलेंजेस को और जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है उनके साथ भी फाइट बैक कर सके. तो ये पोर्टल्स, ऐसे ट्रस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स हियर फ्रॉम द पीपल. सम आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर 1, सम आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर 2. सो गाइस, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट. तो यहां पर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आईएमएफ ने रिसेंटली लॉन्च किया है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट को. अब देखते हैं उसकी कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में. इसकी जो इफेक्टिव डेट है दैट इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द 1st of May 2022. एम हम उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन के अंदर कि क्या उसका एम था. अब गाइस, यहां पर जब हम बात करते हैं कि अमाउंट कितना रेज किया जाएगा इस ट्रस्ट द्वारा जिससे कि हम हेल्प कर सके इन पर्टिकुलर कंट्रीज को, तो दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी बेसिकली एटलीस्ट $45 billion टू सपोर्ट द एम फॉर विच this particular trust has been launched. Apart from that, in addition, $650 billion allocation भी यहाँ पर दी जाएगी under the SDR. और हमने यहाँ पर एक और अपडेट किया था कि SDR के अंदर जो वेटेजेस यहाँ पर चेंज की गई हैं ग्लोबल करेंसीज की, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन अपने पिछले सेशन के अंदर कवर कर चुके हैं. If you do not remember, you can just go back to that particular session after this session and see that what exactly are the recent changes made under the weightages of those SDR. So I hope this is clear. Let's move on to the next question.
So the next question is on that Department of Land Resources, Ministry of Rural Development has released an e-booklet. See guys, once again I'm telling you that you will be getting such kind of long information in the exam, but I already told you that what you are required to do. आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पर फोकस करना है कीवर्ड्स के ऊपर. सबसे पहले जाना है अपने लास्ट पार्ट के ऊपर कि क्या वहां पर मेंशन्ड है. एंड हियर इट इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about the ULPIN is or are correct. तो very important thing is ULPIN. The second important thing is कि क्या उसकी यहां पर डिमांड है, that is it is asking the incorrect statement. तो सबसे पहले ULPIN की फुल फॉर्म क्या है? It basically stands for the Unique Land Parcel Identification Number. So अब आपको क्या करना है, you are required to quickly go through these particular statements and then tell me that what exactly is incorrect in this particular part about ULPIN. So please tell me that what is the right answer. Here the options are, it is being developed by the National Informatics Center. The second statement is talking about that कि कितने डिजिट का ये कोड होने वाला है. The third thing is about कि क्या किस चीज पर बेस्ड होगा, लॉन्गिट्यूड पे होगा, लैटिट्यूड के ऊपर होगा. एंड द फोर्थ थिंग इज कि कितनी स्टेट्स में उसको प्रेजेंटली रोल आउट किया गया है. एंड आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स हियर. द पीपल आर ऑप्टिंग ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. तो यहां पर गाइस आप देख सकते हो कि इट इज गोइंग टू बी अ 14 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आईडी फॉर ईच लैंड पार्सल इन द इंडिया. बट क्वेश्चन के अंदर दिया गया था दैट इट इज अ 10 डिजिट यूनिक नंबर, सो दैट इज व्हाई इट वाज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. एंड हियर द राइट आंसर इज दिस. सो नेहा तिवारी, सुभस्मिता, अनुराधा, सोनाली, नेहा, पवित्र, एवरीबॉडी हैव आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली. आई एम रियली ग्लैड टू सी कि सभी स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है. दे आर रियली गिविंग द आंसर्स करेक्टली. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी. तो कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर इस पॉलिसी को लॉन्च करती है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. तो प्लीज बताइए जल्दी से कि क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर. नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी. सी गाइस, यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस के साथ कर सकते हैं. सी व्हेन वी टॉक अबाउट द फार्मास्यूटिकल्स, काफी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, तो दैट्स व्हाई यू कैन डायरेक्टली लिंक दिस पर्टिकुलर टर्म विद द केमिकल्स. सो हियर द राइट आंसर इज द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. That is why it is the right answer. And see, I am seeing that some of the people have directly answered that option 1 is the right answer. See guys, option 1 is not the right answer. See, हमें पता है कि that pharmaceuticals are basically for the health industry, but यहाँ पर हमेशा ऐसा नहीं होने वाला कि डायरेक्टली आप ऐसे लिंक कर सकते हैं. तो आप अपना एक तरीका भी निकाल सकते हैं, बट इफ अगर मुझे याद करना होता है, सो आई विल बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ ट्रिक इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डेटा. So now let's move on to the next question, and the next question is about e-health card. So you are required to tell me कि इनमें से कौन सी states या UTs हैं जिन्होंने कि recently announce किया था that we will be providing all the citizens of that particular state or UT with the e-health cards. So you are just required to tell me the name of the state or the UT government which has decided to provide e-health card, and that is a very important part, guys. Why so? Because this is basically from the social infrastructure health, and that is why this question is really very much important from the exam point of view. So I am getting the right answers here. So some people are going with option number D as the right answer. So everybody is going with option number D. And now Seema Sadashiv is saying that option number 1 is absolutely the right answer. And guys, you are absolutely right. The right answer to the question is option number 1. That is the government of National Capital Territory of Delhi has decided this, that they will be providing the e-health cards, and by which year they will be implementing this part? They will be implementing this by year 2023. और यहाँ पर आपको इसका नाम भी याद रखना बहुत ही जरूरी है, that it stands for Health Information Management System. So I hope that this is very much clear to all of you. So इसी तरीके के initiatives हैं जिनके ऊपर questions आते हैं एग्जाम के अंदर, and that's why you are required to remember about these part on the exam point of view. So let's move on to the next question. तो next question है आपका इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी के ऊपर, जिसका टाइटल था इंडिया एंड आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो प्लीज टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन की कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है. इज इट द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी, और द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज? So let's see who will answer the question correctly.
सी ऐसी कभी भी कोई पॉलिसी आती है तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इज दैट कि कौन सी मिनिस्ट्री ने उसको लॉन्च किया है, उसका एम क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है, क्या उसके पैरामीटर्स हैं, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर. एंड हियर आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. तो यहां पर इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए, वो है इसके 6 पिलर्स. आपको याद रखना चाहिए कि ये जो इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी है इसके अंदर टोटल है 6 पिलर्स, और वो कौन कौन से हैं, दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड हियर. दैट इज साइंस एंड रिसर्च, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, and the national capacity building. So these are the important pillars that you must remember about this policy. Let's move on to the next question, and the next question is on the radio aksh. See, this is what is making this particular radio aksh more important from the exam point of view, because it is India's first internet radio channel. और ये channel किसके लिए? सी खाली इंडिया का पहला है, that is why it is not important. It is basically for launch for the visually impaired people, and that is why it is important. And the name of this particular channel is also very important, that is radio aksh. And you are required to tell me कि इसमें से कौन से cities में basically इसको launch किया गया है. Is it वाराणसी, नागपुर, पुणे, कोलकाता और अहमदाबाद? So here some are going with option number 2, that is Nagpur, Maharashtra, and Abhay is saying that option 3, Pune is the right answer. So guys, here the right answer to the question is option 2, that is Nagpur, which is in Maharashtra. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नागपुर महाराष्ट्र के अंदर इसको लॉन्च किया गया है. ये पहला इंटरनेट रेडियो है फॉर द विजुअली इंपेयर्ड पीपल इन इंडिया. तो यहां पर ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपका स्कूल चलो अभियान के ऊपर. तो स्कूल चलो अभियान रिसेंटली वन ऑफ द इंडियन स्टेट्स हैज लॉन्च्ड in some of the districts, and one of the districts is श्रावस्ती. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वो स्टेट है जिसने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है अपने श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसकी लोएस्ट लिटरेसी रेट है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर. सो यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू टेल मी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट व्हिच हैज रिसेंटली इंप्लीमेंटेड द स्कूल चलो अभियान इन श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट. एंड एब्सोल्युटली राइट गाइस, द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश ने इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, और इसका टारगेट क्या है? सी टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू इंश्योर 100% एनरोलमेंट इन द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स. तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स के अंदर 100% एनरोलमेंट रहे. दैट इज व्हाट इज द बेसिक एम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्चिंग दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव. द नेम ऑफ द इनिशिएटिव इज स्कूल चलो अभियान. So that is why it is more important from the exam point of view. Let's move on to the next question. So the next question is about the World Bank and AIIB. See, recently कुछ amount of loan was approved by the World Bank and AIIB to the Gujarat government for the project. And guys, this project is basically about the school excellence project of the Gujarat government. So please tell me that what is the right answer to this question. कितना लोन यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और AIIB मिलकर दे रहे हैं to the Gujarat government for the school excellence project? Let's see who will answer the question correctly. Question number 12. What is the right answer, guys? Please tell me quickly in the comment section. So here Girish, Nilesh, everybody is going with option number 2 as the right answer. That is 6500 crore, but that is not right. The right answer is 7500 crore. So here you can see that World and Asian Infrastructure Investment Bank, जिसने कि यहाँ पर टोटल लोन प्रोवाइड किया है 7500 करोड़ का for the Gujarat Mission School of Excellence project, a very important project that is being launched by the Gujarat government. तो यहाँ पर आपको 3 डायमेंशंस को याद रखना है. The very first thing is the name of the organization जिन्होंने कि ये लोन दिया है, that is World Bank and AIIB. The second important thing, the amount of the loan that they are giving, and the third important thing, that for which project they are providing this loan, that is for the Gujarat मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट. और यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल 10,000 करोड़ का पैसा इन्वेस्ट करने वाली है ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years. That is also a very important point that you should note down about this particular project. So I'm really glad that most of the students have answered the question correctly. Let's move on to the next question. So the next question is about the Ministry of Panchayati Raj. तो उन्होंने recently एक national level कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया था, और वहां पर उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन की थी. और आपको मुझे बताना है कि उसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने इसको साइन किया है, और बेसिकली उनका एम क्या है. सी वी ऑलवेज टेल यू दैट व्हेनेवर एन MOU हैज बीन साइंड,
what exactly you are required to cover? You are required to cover the name of the parties, the पहली चीज. दूसरी चीज है उसका एम. तो पार्टीज के बारे में आपको पता चल गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने यहाँ पर एमओयू साइन किया है और उसका एम क्या है? टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. तो इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉवर्टी को हमें हटाना है. तो यहां पर जब हम बात करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसके साथ ये जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज यूएनडीपी. सो गाइस, जो भी वर्ल्ड बैंक इसका आंसर दे रहे हैं, सो गाइस वर्ल्ड बैंक इज नॉट द राइट आंसर. तो राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. एंड हियर यू कैन सी दैट अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज बीइंग signed between the Ministry of Panchayati Raj and the United Nations Development Program India. So that is what you are required to remember, the name of the parties, and we have also discussed that what exactly was the aim of this particular joint understanding. So I hope this is very much clear. Let's move on to the next question. So the next question is, recently क्या हुआ था guys? एक exclusive township for the dairy farmers was being set up, और आपको बताना है कि कौन सी सिटी के अंदर उसको सेटअप किया गया है. So this is what you are required to tell me here, exclusive township for the dairy farmers, and this term is basically making it more important for the NABARD Grade A exam. So आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि NABARD Grade A exam में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, and that is why you are required to remember. एंड यहां पर कुछ बच्चे कह रहे हैं ओ गॉड ये क्वेश्चन हमारा कैसे गलत हुआ, वर्ल्ड बैंक हमने यहां पर चूज किया था बट आंसर इज द यूएनडीपी. सी गाइस, इस तरीके के सरप्राइजेस आपको एग्जाम में भी मिल सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी हैव ब्रॉट सच काइंड ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, ताकि आपके ईएसआई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है मंथ ऑफ अप्रैल 2022 के वो बहुत ही इजीली कवर हो जाए और आपको ऐसे सरप्राइजेस एग्जाम के अंदर ना मिले. सो गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर टू द क्वेश्चन is option 3, that is Gandhinagar. See guys, option 3 is not the right answer. The right answer here is basically Kota, Rajasthan. There is some technical error here. So Kota, Rajasthan is absolutely the right answer for this particular question, and it is one of its kind township for the dairy farmers. और यहाँ पर ये कितने अमाउंट में इसको बेसिकली लॉन्च किया गया है? It has been set up for with a amount of 300 crore worth Dev Narayan Integrated Housing Scheme by the Kota Urban Infrastructure Trust. Very important thing that you should remember from the exam point of view, that is the name of the place is Kota, Rajasthan, जिसके अंदर ये ऐसा पहला टाउनशिप लॉन्च किया गया है. So let's move on to the next question. So the next question is, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली मैंडेटरी किया है कि आपको अगर घर के अंदर काउज या बफेलोज रखने हैं अर्बन एरियाज के अंदर, तो उसके लिए आपको एक एनुअल लाइसेंस को मेंटेन करना होगा, आपको एक एनुअल लाइसेंस लेना होगा. सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर. सो इज इट उत्तर प्रदेश, पंजाब, न्यू दिल्ली, राजस्थान और केरला? सो गाइस, व्हाट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 15? लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली. Which state government has made it mandatory to have an annual license for keeping cows or buffaloes at home in the urban areas? These are the key points that you should remember from the exam point of view. And I am getting the right answers here. The right answer is Rajasthan. So guys, हमने already पढ़ा अपने पिछले क्वेश्चन के अंदर कि राजस्थान के अंदर कोटा के अंदर ऐसा पहला टाउनशिप क्रिएट किया गया है for the dairy farmers. And now is another development, and see this question is basically related to the previous question that we have covered recently, and now when I talk about this part here, once again the right answer is Rajasthan. So जो भी students यहाँ पर उत्तर प्रदेश को अपना सही आंसर पुट कर रहे हैं guys, it is not the right answer. The right answer to the question is Rajasthan. I hope that this is very much clear to all of you. तो राजस्थान गवर्नमेंट ने बेसिकली मैंडेटरी किया है कि एक हमारे पास एनुअल लाइसेंस होना चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च, जिसने की रिसेंटली एक वर्किंग पेपर लॉन्च किया है इंडिया की पॉवर्टी के लिए. एंड इन दिस क्वेश्चन यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिलेशन विद दैट वर्किंग पेपर लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च. So guys, quickly go through these particular statements and tell me that what is the right answer. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया की एक्सट्रीम पॉवर्टी के ऊपर कुछ डेटा प्रोवाइड किया गया है और आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर क्या है. Whether it is the statement number 1 which says that the extreme poverty in India has declined by 12.3 percentage points, और इज इट द सेकंड स्टेटमेंट विच सेज कि यहाँ पर रूरल इंडिया के कंपैरिजन में अर्बन एरिया में ज्यादा पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज दैट रियल इनकम फॉर द फार्मर्स विद द स्मॉलेस्ट लैंड होल्डिंग हैव ग्रोन विद अ परसेंटेज ऑफ 2%. सो दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी.
So Anuradha is posting some question that will these current affairs be sufficient for the prelims? See guys, we are already on every session we are basically telling you guys that this is not the end of the current affairs. We are bringing you the most important questions और उसके बाद हम आपको already homework भी दे रहे हैं for your better preparation. So please for now just focus on the question, and if you are guys अगर आपकी कोई भी query आती है so you are requested कि आप session के end में अपनी queries को post करें, and that will really be very good to maintain the flow of this particular session. So I hope that this is clear, and when I talk about the right answers, absolutely right, most of the people have answered the question correctly. That is option 1 is the right answer. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि पिछले जो statements थी वहां पर गलत किया गया था. See guys, very important thing, जो poverty reduction हुई है, it was higher in the rural areas in comparison to the urban India. That was the very first point. And the second important point which was incorrectly mentioned there was that जो हमारे small land holding वाले farmers हैं उन्होंने ग्रो कितना किया है, बेसिकली उनकी रियल इनकम ग्रो हुई है 10% से. एंड गाइस यू कैन आल्सो मेंशन दिस पर्टिकुलर फैक्ट व्हेन यू विल बी आंसरिंग द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इन द मेंस एग्जाम. तो यहां पर सी ये वाले जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, दे आर नॉट जस्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम. You are really going to complement this. See, this particular part can be used while answering the descriptive questions in the mains exam. That's why they are really very important. Or agriculture से related exam है guys. That's why these kind of data are really very important. Let's move on to the next question. So the next question is on the Jan Nigrani app. So please tell me कि Jan Nigrani app इनमें से कौन सी स्टेट ने recently launch किया है? Is it Punjab, Delhi, UP, Jammu and Kashmir or Kerala? So which one of the following state or UT governments has launched the Jan Nigrani app? Is it Punjab, Delhi, UP, Jammu and Kashmir or Kerala? And absolutely right, the right answer is Jammu and Kashmir. तो जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया है जन निगरानी ऐप. इसको डेवलप किसने किया है? रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर. एम गाइस इसका क्या है कि जो भी हमारे रेजिडेंट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनको अगर कोई भी ग्रीवेंसेस है तो वो उसको रिपोर्ट कर सके और साथ में उसको रिजॉल्व करा सके अगेंस्ट द वेरियस स्कीम्स ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. So this is basically the important thing that you should remember from the exam point of view. Let's move on to the next question. So the next question is on the All India Nationwide Pension Adalat. See guys, this particular Adalat was basically inaugurated by the Digital Communication Commission to resolve the grievances of the pensioners within a period of 30 days. So please tell me that it has been organized under which of the following organizations. तो ये जो recently अदालत लॉन्च की गई थी, ये इसमें से कौन से डिपार्टमेंट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था? Is it Controller General of the India, Controller General of Accounts, Controller General of Communication Accounts, Finance Commission or the Supreme Court of India? So please tell me that what is the right answer. Here you are required to just tell me the name of the organization जिसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है. And here the right answer to the question is option 3, that is Controller General of Communication Accounts. See guys, whenever such kind of special events are being held, you are always required to remember कि उसको organize कौन करा रहा है, उसकी theme क्या थी, because the questions can be framed in the exam on such lines. So I am getting here that most of the people have answered the question correctly. SK Saddam, Vidisha, Nehal, Harish, Ace, everybody is saying that the right answer is option 3. Well done guys. Let's move on to the next question. So the next question is basically that you are required to tell me about this particular act. तो Employee State Insurance Act 1948 यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, and you are required to tell me कि हम इनमें से कौन सी एंटिटीज को एक्सक्लूड करते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट से. So Employee State Insurance Act 1948 do not include which one of the following entities. Is it the factory with having less than 10 employees, or it is a factory which is having more than 10 employees, or they are the seasonal factories? So please tell me what is the right answer. See, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स क्या है. See guys, what exactly are the keywords here? The very first important thing is the name of the act. The second important thing, what exactly is being asked? Excluded. Which of the following establishments are excluded from such a kind of act which has been mentioned here? And here people are saying that option 3, that is both A and C only, is the right answer. That is absolutely right. Option 3 is the right answer. So guys, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमारा एक्ट है ये कहाँ एप्लीकेबल होता है. So here you can see that all factories excluding the seasonal factories. तो जितनी भी हमारी seasonal factories हैं उनको हटा के वो सभी factories जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, basically this act is applicable to those particular entities. So I hope that this is very much clear to all of you. Let's move on to the next question. And in the next question you are just required to tell me कि
इंडिया के अंदर कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं? सी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने एक डेटा यहां पर शेयर किया था ऑन द मैनुअल स्कैवेंजर्स इन द 17 इंडियन स्टेट्स. So you are just required to identify the name of the state which is having the maximum number of manual scavengers in India. Is it Chhattisgarh, Jharkhand, Haryana, Uttar Pradesh or Madhya Pradesh? So let's see who will answer the question correctly. So here some people are going with option number 1, some are going with option number 3. So guys, here the right answer to the question is basically option 4, that is Uttar Pradesh. So Uttar Pradesh is the right answer to this question, and here you can see that as per the data which is being given, Uttar Pradesh is having the highest number, that is 32,473, and Chhattisgarh is having the minimum, that is the number is not mentioned here, but guys, Chhattisgarh is having the minimum. So please make sure that you remember such kind of details, that maximum manual scavengers are in the Uttar Pradesh and the minimum are in the Chhattisgarh. So these two data are really very important. Let's move on to the next question. So guys, here the next question is ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड. तो ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड यहां पर हमारा आया है क्वेश्चन के अंदर. यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सी रीड इट कंप्लीटली. इट इज आस्किंग यू अबाउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए कि इसमें से क्या है. ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड, इट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड एंड यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई दैट इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट द ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड. सी always I tell you that whenever you find such kind of organization, you are always required to just focus on the keywords. तो सबसे पहली चीज लॉन्च किसने किया था? नीति आयोग ने किया था. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है. Third thing is that it will involve private sector as well as the state support. The fourth one is that the fund would be provided by the Global Innovation Partnership. So here some of the people are going with the option number 1 as the right answer. Some are going with option number 2. So guys, here when I talk about the right answer is option number 1. So here the Niti Aayog is not the correct part. Here it should replaced by the Ministry of External Affairs. So Ministry of External Affairs ने इसको launch किया है as an alternative to the Belt and Road Initiative of the China. So I hope that this part is very much clear, and all the other statements we have already done in our question itself. So I hope that this is very much clear, guys. So now let's move on to the next question, and the next question is about the Resina Dialogue 2022. See guys, once again I'm repeating here that such kind of events, do not even ever think of leaving these kind of topics, because if you have seen the RBI Grade B 2022 mains exam, then there was a question on the Resina Dialogue. और यहाँ पर guys जो dimensions थी इस question की, you can remember here that कि क्या dimensions थी इस particular part की, कि वहां पर question था कि भाई theme कौन सी थी, इसको chief guest कौन से थे, sideline of the events were also being asked in the exam. So that's why you should be very thorough with such kind of topics which has recently held in the for the exam point of view. तो but इस बात की बात करें guys, इस question की बात करें तो here the question is just about the theme, कि theme क्या थी इसकी. Whether it is option number 1, 2, 3, 4 and 5, please tell me the right answer. So Anuradha is saying that option number 2 is the right answer. Anubhai is saying 3, Neha is saying 2, Rishabh is saying option 2. So guys, option 2 is absolutely the right answer. That is Terra Nova, impassioned, impatient and imperiled. That is the right answer to this question. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी की सभी important dimensions about the Resina Dialogue has been covered here. So here you can see the Prime Minister of India inaugurated the Resina Dialogue at New Delhi, and this was the 7th annual edition. And this guys, I want to here mention that Ministry of External Affairs का एक flagship initiative है, that is the Resina Dialogue, and this was held in New Delhi. But यहाँ पर एक important चीज है कि जो उसके side events थे Resina Dialogue के, they were basically being conducted in Berlin, Germany and Washington DC, that is in the USA. तो यहाँ पर इन चीजों को भी आपको थोड़ा रिमेंबर करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अब एग्जाम के अंदर देखे गए हैं. सो यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कवरिंग सच काइंड ऑफ टॉपिक्स. ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ई-श्रम पोर्टल. सो प्लीज टेल मी कि रिसेंटली ई-श्रम पोर्टल के साथ इनमें से कौन से पोर्टल को कनेक्ट किया गया है, लिंक किया गया है, जिसका बेसिकली एम था टू प्रोवाइड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए यहाँ पर इसको लिंक किया गया है ई-श्रम पोर्टल को, इसमें से एक पोर्टल के साथ. सो प्लीज टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ दैट पोर्टल. इज इट द एनसीएस पोर्टल, असीम पोर्टल, उद्यम पोर्टल, और बोथ 1 and 2 और बोथ 2 and 3? प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज द राइट आंसर.
तो क्वेश्चन हियर इज अबाउट द ई-श्रम पोर्टल, उसको कौन से पोर्टल के साथ लिंक किया गया है, एंड हियर सम पीपल आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर ई एज द राइट आंसर, बट गाइस हियर ई इज नॉट द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल को इंटीग्रेट किया गया है रिसेंटली ई-श्रम पोर्टल के साथ, जिससे कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को हम बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकें। सो दैट इज बेसिकली द राइट आंसर गाइस। सो आई एम मार्किंग द स्टार हियर, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी स्टूडेंट ने सही नहीं दिया है, एंड दैट इज व्हाई आपको यहां पर बहुत ही ध्यान रखना होगा अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन दैट द ई-श्रम पोर्टल वाज बेसिकली लिंक्ड विद द एनसीएस पोर्टल रिसेंटली, ऑल्दो इन द बजट इट वाज बीइंग मेंशन्ड कि ये असीम पोर्टल और बाकी पोर्टल्स के साथ भी इसको लिंक किया जाएगा, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट्स इट हैज ओनली बीन टिल नाउ being linked with the e-श्रम portal. So once again I am getting OMG in the comment section. So guys I want that less number of OMGs are there, और जो OMG का इस्तेमाल भी हो तो तभी हो जब आप सभी के सभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर करें। So let's move on to the next question. So the next question is on the project उन्नति. So guys project उन्नति के ऊपर है अगला क्वेश्चन। Kindly tell me that what is the right answer. Once again you can see कि इस तरीके के questions you can find in the exam. तो प्रोजेक्ट उन्नति यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि रिसेंटली लिया गया था, और आपको बताना है कि इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिलेशन टू द प्रोजेक्ट उन्नति। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने पहली स्टेट किया है 75 ट्रेन कैंडिडेट्स को ऑफ द प्रोजेक्ट उन्नति अंडर द मनरेगा। सी मनरेगा को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था गुरकीरत सर ने अपने लास्ट स्कीम के सेशन के अंदर, और यहां पर आप सभी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मनरेगा के अंदर, और उसी के अंदर प्रोजेक्ट उन्नति को शुरू किया गया है, और उसके अंदर आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मेंशन्ड है। सो प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज द राइट आंसर। सो जुबिन इज सेइंग दैट आई एम स्किपिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। सी गाइस, when we are conducting such kind of session you are required to identify and to answer the question, because if you will be committing the mistake here then in the exam you will be remembering that what mistake I just did during that session, and this will help you in remembering about that particular initiative जिसके ऊपर आपने गलत attempt किया था। But in the exam if you do not remember that you can use elimination part, और तब भी आप अपने सही आंसर तक नहीं जा पाए तो then you can skip that particular part। ठीक है guys, so when I talk about the right answer is option 1, that is both A and B only। तो जब हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट सी के अंदर क्या इनकरेक्ट है, सी स्टेटमेंट सी कहती है कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड दे वुड बी ऑफर्ड अ स्टाइपेंड फॉर अ मैक्सिमम 50 days at the wage rate applicable at the concerned rates, but see guys it is not being, they are not being provided with the stipend of the 50 days, instead they are being provided with the stipend of 100 days, that is why the statement number C is incorrect। and here you can see this particular part here as well which is being mentioned here। तो यहां पर आप देख सकते हो गाइस कि यहां पर आपको दे रखा है कि 100 डेज के वर्क का उनको कंप्लीट स्टाइपेंड मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई the option number C, the statement C is incorrect from the exam point of view। Let's move on to the next question। So the next question is on the startup founder hub। तो प्लीज टेल मी कि इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्टअप फाउंडर हब को रिसेंटली लॉन्च किया है। Here you are required to just tell me the name of the IT company which recently started the startup founder hub। Is it Amazon, Infosys, HCL, Microsoft or Wipro? Let's see that which student will answer the question correctly। Here it is a really a halwa question for all of you कि guys see IT कंपनीज जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी टूल्स एंड रिसोर्सेज टू रन द बिजनेसेस। दैट मींस दे आर बेसिकली एनकरेजिंग द स्टार्टअप कल्चर, दे आर encouraging the entrepreneurship। That is why it is really very important। So when I talk about the right answer is Microsoft, and all the people have answered the question correctly। Well done guys। So here you can see that Microsoft for the startup founders hub, it is a new digital and inclusive platform for the startup founders in India। जो भी startup founders है इंडिया के अंदर उनके लिए लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। That is what you are required to remember from the exam point of view। So moving on to the next question, you are required to just tell me the name of the mascot which was recently launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक के एलिमिनेशन के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं उसके बारे में अवेयर करने के लिए यहां पर एक मैस्कॉट को लॉन्च किया गया था। जस्ट टेल मी दैट व्हाट इज द राइट आंसर। इज इट नेचर, प्रकृति, कुदरत, पर्यावरण और परवाह। लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 26, what is the right answer? And I am getting the right answer here। Nilesh is saying option B is the right answer।
Agricross, Mridul, Vidisha, Pooja, everybody saying that option B is the right answer. Absolutely right, guys. Prakriti is the right answer to this particular question. And this particular mascot has been launched as a step towards the elimination of the single-use plastic. And see, guys, we all know कि जो single-use plastic है उसको यूज को खत्म करने के लिए 1 जुलाई 2022 से ये रूल यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है एंड दैट इज आल्सो यू शुड रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी कि सीडीआरआई का रिसेंटली इनमें से कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है. Which of the following countries has become the 30th member of the CDRI initiative? See guys, CDRI initiative जिसका secretariat है न्यू दिल्ली के अंदर and this was basically launched by the Indian government. So please tell me that what is the right answer here. Is it Seychelles, Djibouti, Madagascar, Ethiopia or Ukraine? What is the right answer to the question number 27? So I am getting the right answers here. People are saying option 3. Absolutely right. Madagascar is the right answer to the question, which has become the 30th country to join the CDRI. I hope this is very much clear. Let's move on to the next question. And the next question is on the Amazon Sambhav Entrepreneurship Challenge 2022. And here once again very long information is mentioned. What you are required to do? Just tell me कि क्या इनमें से कौन सी थीम है इस पर्टिकुलर चैलेंज की. Is it प्रोत्साहन, प्रगति, संभव, सहायक, उन्नति? So guys, here you can see कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम के अंदर. The examiner will just try to trick you. It will try to make it difficult for all of you by giving this long information. But in the end, you will see that the question was very easy. But you will only realize that when you will come back after giving the exam. But ऐसा नहीं करना है. That is the reason that we are covering up. We are coming up with such kind of initiative, with such kind of questions, so that you can practice them and you can become ready to answer the question successfully in the exam. So guys, when I talk about the right answer is Pragati. See guys, Pragati is not the right answer here. The right answer is Sambhav basically. Pragati is question का right answer है. Sorry, that's my mistake. So Pragati is the right answer to the question. Here you can see that theme of this particular Amazon Sambhav 2022 is Pragati. So Pragati is the right answer to the question, guys. तो यहाँ पर सी देखिए कि confusion हो सकती है. That's why you must be very careful while covering such kind of topics. ठीक है जी. Let's move on to the next question. So the next question is on the National Stakeholder Conference on the Localization of Sustainable Development Goals. SDGs that are meant to be achieved by year 2030 and total 17 SDGs are there. तो अब मुझे बताइए कि रिसेंटली ये जो ऑर्गेनाइज की गई थी स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस, इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था. सो गाइस, हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ ली है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर. अब आपको मुझे बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया है. इज इट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पंचायती राज, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और द एक्सटर्नल अफेयर्स? We always see in the exam that in the exam they just ask the question on the name of the ministry only, and that is why the very first dimension when you are covering about such kind of initiative, you are just required to remember कि कौन सी मिनिस्ट्री का बेसिकली इसने लॉन्च किया था. So here I am getting the right answer. The right answer is Ministry of Panchayati Raj. Absolutely right. Anubha, Subhashmita, Sadashiv, Pharma, Pavitra, Anuradha, every ने this question का सही answer. Let's move on to the next question. So the next question is on the National Dam Safety Authority and National Committee on the Dam Safety. So please tell me कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इस पर्टिकुलर पैनल को रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट किया है. तो गाइस सी, रिसेंटली ये अथॉरिटी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी. यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री. Is it the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jal Shakti, Earth Science, Ministry of Science or the Ministry of Home Affairs? And here the right answer to the question number 30 is option number 2, that is Ministry of Jal Shakti. तो Ministry of Jal Shakti ने recently इस particular authority को constitute किया गया था. And guys, this will be basically headquartered in the National Capital Region. तो बाकी की जो गाइस दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पर याद रखनी जरूरी है, that is that the center has also constituted a 22-member National Committee on the Dam Safety. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको हेड कौन करेगा. तो जब हम बात करते हैं हेड कौन करेगा, इट विल बी हेड बाय द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन. तो सेंट्रल वाटर कमीशन की जो चेयरमैन है, दैट पर्सन इज गोइंग टू बेसिकली हेड दिस पर्टिकुलर 22-member panel. So very important thing, we have discussed all of them in this particular part. Let's move on to the next question. So the next question is, which of the following organizations has joined the One Health
by signing an MOU with the annual executive meeting at Nairobi, Kenya. तो रिसेंटली एक नैरोबी कीनिया के अंदर मीटिंग हुई थी, उस दौरान यहाँ पर एक MOU साइन किया गया जिसमें कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने वन हेल्थ नाम के इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है. सो प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज द राइट आंसर. इसमें से कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस MOU को साइन किया है और बाकी की सी ये जो वन हेल्थ इनिशिएटिव है, इट वाज बेसिकली अ ट्राइलेटरल इनिशिएटिव, मतलब कि तीन पार्टीज इसका पार्ट थी, बट विद the signing of this MOU, this party has become the fourth party to become the part of this initiative. So let's see who will answer the question correctly. Please tell me that which one of the following organizations recently signed an MOU to join the One Health initiative. And here, absolutely right, the right answer is UNEP, that is United Nations Environment Program. तो जब हम बता दें कि पहले ये कौन था, पहले थी Food and Agriculture Organization, then World Health Organization, and the third organization was the World Organization for Animal Health. So these were the three parts, and now the fourth one has become the UNEP, that is United Nations Environment Program, that we have already discussed in the question itself. Moving on to the next question. So the next question is, recently an MOU was signed between the India and UK. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन है आपका GCNEP के ऊपर, दैट इज द कॉर्पोरेशन ऑन ग्लोबल सेंटर फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप. एंड इन दिस क्वेश्चन यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई कि GCNEP के ऊपर जो स्टेटमेंट्स गिवन है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है. तो जब भी ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है या इनिशिएटिव की बात होती है, यू मस्ट रिमेंबर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दोज इनिशिएटिव्स, क्योंकि हमने लास्ट ईयर के एग्जाम में देखा there was the question on FAO, there was the question on ASEAN, there was such kind of questions which are talking about the current affair as well as the static part of these kind of organizations, the regional groups, and that is why you are required to remember the important points about such kind of initiatives, the groups and the regional organizations as well. So guys, now please tell me that what is the right answer. GCNEP, it is the world's first nuclear energy partnership center. The government of India approved the establishment of GCNEP in year 2015. See guys, once again I am telling you, आंसर करने से पहले प्लीज रीड आउट द स्टेटमेंट्स केयरफुली. यहाँ पर फोकस कीजिए कीवर्ड्स के ऊपर. द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट दैट दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप सेंटर. एब्सोल्युटली राइट, बट द सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया था ईयर 2015 के अंदर, एंड दिस थिंग इज एब्सोल्युटली incorrect. So that is why this is not the right answer, and even the third statement is incorrect. Why so? Because it says that the GCNEP is located at Jasor Khidi village in Jhajjar district. And here, what is the name of the state which has been mentioned here? The name of the state is Uttar Pradesh, and here guys, this part is once again incorrect because it is not Uttar Pradesh, it is basically Haryana. So here you can see that it is the world's first nuclear energy partnership center. When we talk about approval which was being given by the India, it was basically in year 2010 and not in the 2015 which is mentioned in the question. That's why it is incorrect. The third part is that it was mentioned Uttar Pradesh here, but it is Haryana, and that is why the third statement is also incorrect. That's why the right answer was only one. So let's move on to the next question. I hope कि जो last question था वो आप सभी को clear होगा guys. Now tell me what is the right answer to this question. You are just required to tell me कि इसमें से कौन सी state के साथ Google ने recently MOU sign किया है, and what exactly the aim of this MOU. The aim of the MOU is to bring benefits of digital economy to the youth and women entrepreneurs. तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, यूथ जो है, उनको डिजिटल इकोनॉमी का पूरा फायदा मिले, इसके लिए गूगल ने रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है. सो प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टेट, एंड हियर द राइट आंसर इज केरला. So guys, Kerala is the right answer to the question, and here you can see कि sorry, Kerala is not the right answer guys. Here the right answer is Telangana. So Google ने यहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ ये MOU साइन किया है, और here you can see that what exactly are the key details of this particular MOU. So Google ने तेलंगाना के साथ ये MOU साइन किया है जिससे कि they can just bring out the benefits and they can provide those benefits to the youth and the women entrepreneurs of these digital economies. So that is what is the right answer to this particular question, and it is also going to support the Telangana government's efforts to improve the public transportation and the use of digital technologies in the agriculture, and that is why it is the right answer to the question. So Ayush, Anubha, Harshal सभी ने दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर. So guys, let's move on to the next question.
So question number 34. Here the question is that about the UVA initiative. So guys, UVA initiative is a flagship initiative and you are just required to tell me the name of the organization जिसका ये flagship initiative है. Is it the World Bank or it's the BRICS or it's the ADB, UNICEF or UNHRC? So please tell me quickly in the comment section कि what is the right answer to the question. We all know युवा initiative क्या है, but यहाँ पर question जो है guys, it's a हलवा question. बहुत ही easy line पर ये question है कि कौन सी organization का ये flagship initiative है. So Nilesh is saying that option D is the right answer, that is UNICEF. So let's wait for others as well to answer the question. So some people are going with option number D, some are going with option number B. So guys, here when I talk about the right answer is UNICEF. So UNICEF का ये इनिशिएटिव है, that is युवा. So जो भी बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को कह रहे थे सही आंसर हो गए, this is not at all correct. The right answer is UNICEF. I hope this is very much clear. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो युवा इंडियन चैप्टर जब ये लॉन्च हुआ था तो इंडिया के अंदर ये बेसिकली लॉन्च किया गया था ईयर 2019 के अंदर. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर कि तब जब भी ऐसी डेवलपमेंट्स, ऐसे इनिशिएटिव्स न्यूज के अंदर होते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दैट व्हाट एग्जैक्टली आर द की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, दैट इज युवा. और अगर हम बात करें अभी जो को-चेयर है, दैट इज बेसिकली यासुमासा किमुरा, व्हिच इज द यूनिसेफ रिप्रेजेंटेटिव and is the other co-chair of the युवा. So I hope that this is very much clear to all of you. Let's move on to the next question, and here the next question is very important question, because here the question is कि इसमें से कौन सा इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि इंडिया के अंदर जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि 100% कार्बन न्यूट्रलिटी को जिसने अचीव किया है. सो जस्ट टेल मी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैज अचीव्ड the 100% carbon neutrality. Is it Pantene, Johnson & Johnson, and L'Oreal, PepsiCo or Colgate? Let's see who will answer the question correctly. So guys, here just required to tell me that 100% carbon neutrality इसमें से कौन सी इंटरनेशनल ब्रांड की इंडियन फैसिलिटी ने इसको अचीव किया है. एंड here some people are going with the Pepsi. So I really think कि यहाँ पर जिसको जो पसंद होगा वो बच्चे वही आंसर करने वाले हैं कि कोई Pepsi कह रहा है, कोई कह रहा है L'Oreal. So guys, here the right answer is basically L'Oreal. So L'Oreal is the right answer to the question. Basically L'Oreal की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है which is based in Baddi, which is in the Solan district of Himachal Pradesh, उसने इस पर्टिकुलर 100% कार्बन न्यूट्रलिटी के अचीवमेंट को अचीव किया है, and that is why it is the right answer to this question. Moving on to the next question. So here you are required to tell me the name of the state government which has recently announced that they will be giving up the free tablets and internet data to the economically weaker and deprived students of classes 10 to 12. So 10 to 12 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों के लिए यहाँ पर जो EWS कैटेगरी से है, that is economically weaker and deprived students of class 10 to 12, तो उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ्री टैबलेट्स और इंटरनेट डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा. So please tell me that what is the name of that particular state. Is it UP, Punjab, New Delhi, Haryana and Kerala? And I am getting the right answers here. People are answering the option number 4. That is absolutely right. The right answer is Haryana. So guys, Haryana is the right answer to the question, which has basically announced that we will be giving up the free tablets and internet data to the economically weaker and deprived students. Very well done guys. Let's move on to the next question. So the next question is once again on this particular part, that which of the following online delivery giants have recently announced 100% plastic deliveries. See, 100% plastic neutral deliveries from April 2022 onwards. A very good step. See, we all know that we are moving towards saving the climate, and that's why such kind of initiatives are being launched by these kind of companies. हमने पहले पढ़ा कि L'Oreal की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कार्बन न्यूट्रल बनी है, and now it is one of the company जिसने कि अनाउंस किया है कि we will be achieving the 100% plastic neutral deliveries. And absolutely right guys, the right answer is option 2, that is Zomato. So Zomato is the right answer to the question. And here you can see recently on the occasion of World Earth Day, see यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी जरूरी है. दैट इज व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्ल्ड अर्थ डे. तो वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को, और उसी दिन पर जोमैटो ने अनाउंस किया कि वी विल बी covering 100% plastic neutral deliveries from April 2022 onwards. और जब हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे की, तो इट वाज आवर प्लैनेट आवर हेल्थ. सो गाइस, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट सम अदर इंपॉर्टेंट थिंग, तो यहाँ पर जोमैटो का जो टारगेट है, इट इज बेसिकली
to deliver more than 10 crore orders in sustainable packaging over the next 3 years. So guys, I hope that this is very much clear. Let's move on to the next question. So the next question is about the Sagar Parikrama initiative, and you are just required to tell me that which ministry has launched this particular initiative, that is Sagar Parikrama, a very important initiative. और PIB सेशंस के अंदर भी आपको ये बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाया गया था when during the month of April 2022. And now please tell me that what exactly is the name of the ministry which has come up with this kind of initiative, that is Sagar Parikrama. And here guys, the right answer to the question is option A, that is Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. So quickly we will go through this particular initiative, that is Sagar Parikrama initiative. So first of all, that why it was being launched, to know the problems of the coastal fisher folks. सी जो भी हमारे फिशर फॉक्स हैं जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव वाज बीइंग लॉन्च्ड. तो बेसिकली उसका एम था टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ द कोस्टल फिशर फॉक्स. उसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. तो अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, यहाँ पर आपको बाकी इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज द बेनिफिशियरी. कौन इसका बेनिफिशियरी होने वाला है, सागर परिक्रमा इनिशिएटिव का. एंड दैट वाज बेसिकली द फिशरमैन, फिशर कम्युनिटीज एंड द अदर स्टेक होल्डर्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन दिस. So that is what you are required to remember from the exam point of view. Let's move on to the next question. So the next question is on the Hydrogen Valley platform. So recently ये platform news के अंदर था. So please tell me कि इनमें से कौन सी statement correct है जो कि mention की गई है about the Hydrogen Valley platform. So guys, please tell me what is the right answer. See, once again I am telling you, just focus on the keywords. Keywords यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ये ग्लोबल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है टू ऑप्टिमाइज द हाइड्रोजन डिमांड. हाइड्रोजन की डिमांड को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये एक कोलैबोरेशन है जो कि की गई है. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये इनिशिएटिव किसके लिए है, फॉर द फ्यूल सेल्स इन हाइड्रोजन जॉइंट अंडरटेकिंग एंड द मिशन इन इनोवेशन. द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इट एम्स टू फैसिलिटेट फ्री डिलीवरी ऑफ 3 clean hydrogen valleys in India by year 2040. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप फोकस करें अपने कीवर्ड्स के ऊपर, दैट व्हाट एग्जैक्टली आर द कीवर्ड्स. सो हियर आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स. पीपल आर ऑप्टिंग द ऑप्शन नंबर 4 as the right answer to the question number 39. And guys, here the right answer is option number 4 only, that is only 1 and 2 are correct. So what is the wrong part in the statement 3? See, what is the wrong part here? It was mentioned that it will be getting by 2030, sorry, by 2040, but here it is mentioned that by 2030 DST is aiming to facilitate the delivery of the 3 clean hydrogen valleys in India. तो इंडिया के अंदर 3 clean hydrogen valleys बनाई जाएंगी, but this will be achieved by year 2030 and not 2040, which was mentioned in the question, and that is why it is the wrong part, and that is why the right answer was option number 4. Let's move on to the next question, and the next question is on the integrated biorefineries mission. So guys, once again I am telling you that whenever such kind of long things are being mentioned, always go to the last line, see that what exactly is been mentioned in the question, what exactly it is demanding, and then if the need is required, then you can just go above and see that what exactly is being written there. But always focus on the last part of the question, that what exactly it is demanding. So when I talk about here, it is basically asking you about the integrated biorefineries mission. So please identify the correct part here and please tell me that what is the right answer to the question. Once again I am telling you, always focus on the keywords here कि क्या है इसके अंदर keywords. And guys, when I talk about this particular mission, this was launched during the 26th conference of the parties of the UNFCCC. It is a public-private partnership mode initiative for the clean energy. The third important point is that it was co-led by Netherlands government with Canada and Brazil. See, जब भी इसी तरीके के initiatives होते हैं, ऐसे missions होते हैं, तो उनको chair कौन कर रहा है, उनको co-chair कौन कर रहा है, that is what you should remember from the exam point of view. And I'm getting the right answer from the people here. Everybody is opting the option number 5. Absolutely right, guys. You guys are really rocking today. I'm really glad to see कि सभी बच्चे अब सभी questions का आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं. I'm really, this is really good to see that. So guys, when I talk about the right answer here, you can always see that all the particular statements about this particular part, we have already discussed this. Let's move on to the next question. So the next question is on the foundation stone of the World Health Organization Global Center for the Traditional Medicine. Very important news.
This was in the news in the month of April. So please tell me कि इसमें से कौन सी प्लेस पे ये पर्टिकुलर सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है, उसको सेटअप किया जाएगा. दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन. सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर. इट्स वाराणसी, गांधीनगर, शिमला, जामनगर और हरिद्वार. सो गाइस प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 41. And I am getting the right answers. Jamnagar, absolutely right, guys. Option D is the right answer. So Nilesh, Subhashmita, Sonali, everybody is saying that the right answer is Jamnagar. Well done, guys. So here you can see कि Jamnagar गुजरात के अंदर इसको basically launch किया गया था, and this is in line with India's vision of one earth, one health. So this is what you are required to remember from the exam point of view. Let's move on to the next question, and the next question is on the World Immunization Week. So please tell me that what exactly was the theme for the year 2022 of the World Immunization Week. So guys, once again I am telling you here that जब भी आपको important weeks की बात की जाए, what you are required to remember that what is the duration, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक इस वीक को सेलिब्रेट किया जाएगा. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द थीम ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक. सो यहाँ पर ड्यूरेशन आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है दैट इट वाज अप्रैल 24 to 30th. नाउ टेल मी कि उसकी थीम क्या थी. Is it the health life for all, or it's long life for all, vaccine brings us closer, or it is vaccine works for protected together. So let's see who will answer the question correctly. So here I am getting the right answer. Some are going with option number A, some are going with option number 3. So guys, here the right answer is option number 2. That is long life for all. So this is basically the right answer to this particular question. You can see here that the theme of this World Immunization Week was long life for all. See guys, once again I am telling you कि क्या क्या dimensions है जो आपको याद रखनी चाहिए whenever you are covering about these weeks and important days. Let's move on to the next question. So the next question is on the first ever Global Ayush Investment Innovation Summit, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था recently in the month of April. So please tell me that which of the following statements are correct in relation with this particular Global Ayush Investment and Innovation Summit. See, जब हमने पिछला एक क्वेश्चन पढ़ा WHO के जो ग्लोबल टेली मेडिसिन सेंटर जो लॉन्च किया गया है, सो सम पीपल वर आंसरिंग दैट इट वाज नॉट जामनगर, इट वाज गांधीनगर. सी गाइस, यहाँ पर बाइफरकेट करने की जरूरत है आपको कि जामनगर के अंदर कौन सा सेंटर खुला है और जो पहली अभी तक की ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट हुई है वो कहां हुई है. सी द समिट वाज हेल्ड इन द गांधीनगर एंड दैट सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन द जामनगर. सो यू मस्ट बाइफरकेट एंड नो हाउ टू बाइफरकेट सच काइंड ऑफ न्यूज आर्टिकल्स, क्योंकि एग्जाम के अंदर they will the examiner will definitely trick you by mentioning here Gandhinagar ko he will replace with the Jamnagar to basically confuse you. So that is what you should remember from the exam point of view. So when I talk about the right answer to this question, the right answer is option number 5, as all the statements about this particular investment summit is absolutely correct. The very first important thing that you should remember is कि कौन सी लोकेशन पर ही हुआ था, दैट इज, और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था. और ये तो हमें यहां से ही क्लियर हो जाना चाहिए दैट इट वाज बीइंग लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस? इट वाज गांधीनगर, गुजरात. और यहां पर जो हमारी MOUs हैं, that is the letter of intents है. letter of intents कितने अमाउंट के साइन हुए, that is what also can be asked in the exam, and here the amount is 9,000 crore that you should remember from the exam point of view. So this is what you should remember from the exam point of view. So यहाँ पर कुछ और important details यहाँ पर mention की गई हैं. For example, ये जो summit थी इसको organize किया गया है in order to promote goal number 3 of the sustainable development goal, that is promoting good health and well-being. So this is what you should also remember from the exam point of view. Let's move on to the next question. And guys, here the next question is, you are required to tell me that which one of the following has become the first carbon neutral panchayat of India. इंडिया की सबसे पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? See guys, this question is really very important. हमने अभी तक पढ़ा कार्बन न्यूट्रलिटी, हमने पढ़ा यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल प्लास्टिक न्यूट्रल डिलीवरीज के बारे में जो कि जोमेटो करने वाला है. अब बात आती है कि इंडिया की सबसे पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी होगी. एंड एब्सोल्युटली राइट, आई एम गेटिंग द राइट आंसर हियर, दैट इज पाली, व्हिच इज इन option number 3, that is Pali. So guys, Pali is the right answer to this particular question. Absolutely right guys, it is basically in the Jammu and Kashmir. So आप यहाँ पर देख सकते हो पाली पंचायत in Sambha district of Jammu and Kashmir,
which is on the occasion of the Panchayati Raj or the National Panchayati Raj, which is being celebrated on 24th April. This has become the first carbon neutral Panchayat of India. So this was the question, and a very important question which can become a probable question in the exam as well. So kindly note that. Let's move on to the next question. And here guys, the next question is, you are just required to tell me the name of the foundation which is being declared as an actor for the United Nations Decade on Ecosystem Restoration. तो ecosystem restoration के लिए जो यहाँ पर एक actor as a recognize किया गया है एक foundation को, you are just required to identify the name of that particular foundation, कि कौन सी foundation को हमने यहाँ पर as an actor recognize किया गया है for the United Nations Decade on the Ecosystem Restoration for year 2021 to 2030, that is for this particular whole decade of 2021 to 2030. So let's see who will answer the question correctly. It's Terry Isha Foundation, Gaia the Earth Foundation, Satpura Foundation, or the India Environmental Society, and I am getting the right answers. So people are going with option number 3 as the right answer. That is absolutely right. Sorry, the right answer is Gaia the Earth Foundation only, guys. There is some kind of technical error here, so do not worry about it. So Gaia the Earth Foundation, it has been recognized as an actor for the United Nations Decade on the Ecosystem Restoration. तो जो भी बच्चे यहाँ पर ईशा कह रहे हैं guys, ईशा फाउंडेशन was behind the Save Soil movement. ठीक है, सेव सॉइल मूवमेंट का पार्ट था ईशा फाउंडेशन, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, सो इट वाज नॉट द ईशा फाउंडेशन, इट वाज गया द अर्थ फाउंडेशन. तो यहां पर हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से बाइफरकेट करते हैं दो इनिशिएटिव्स के बीच में. तो यहाँ पर गाइस बहुत ध्यान से देखिएगा. और ईशा फाउंडेशन का ये जो सेव सॉइल मूवमेंट था, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले सेशन के अंदर. सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज टेल यू दैट व्हेन इट कम्स टू द करंट अफेयर्स, द रिवीजन इज द की. रिवीजन इज द की फॉर द करंट अफेयर्स, एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट बाइफरकेट कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा इवेंट था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा इनिशिएटिव था. So that is what you should remember from the exam point of view. It's okay that this is why that such kind of sessions are being organized for you guys, so that you can attempt the mistakes here only, so that in the exam you can just answer the questions correctly. And guys, now let's move on to the next question. So the next question is on the anti-trafficking units. See, very important part. Recently what has happened that a anti-human trafficking cell was being launched. You are just required to tell me the name of the organization which come up with such kind of initiative, that is anti-human trafficking cell. So please tell me guys that what is the right answer to the question. Is it the Ministry of Women and Child Development, National Commission for Women, National Human Rights Commission, Ministry of Social Justice and Empowerment, or the Niti Aayog? What is the right answer? Here the initiative which is being asked in the question is anti-human trafficking cell, which was recently set up, and I am getting the right answer. The right answer is option number B, that is the National Commission for Women. National Commission for Women is the right answer to this question. So guys, kindly note this part that National Commission for Women is the right answer to this particular question. और यहाँ पर हमने इस particular part को, इस initiative को बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस किया था in our PIB sessions. So once again I'm telling you, it was launched by the National Commission for Women. उसका aim क्या था? To improve effectiveness in tackling the cases of the human trafficking. So human trafficking से related जितने भी यहाँ पर issues हैं उनको हम tackle कर सकते हैं इस particular cell की help से. Apart from that, what else was important, that it is going to increase the responsiveness of the law enforcement agencies. This is what you should cover from the exam point of view. You should remember about this particular initiative from the exam point of view. So National Commission for Women, this is what is the name of the organization which has launched this particular initiative. I hope this is clear. Let's move on to the next question. So the next question is once again on a very important topic, that is the National Family Health Survey. So please tell me that what percent of adolescent girls in India are anemic. So कितनी percentage of adolescent girls in India are anemic as per the National Family Health Survey? So guys, please tell me what is the right answer to the question. Is it 67.1%, 59.1%, 31.1%, 48.5%, or the 72.2%? So please tell me what is the right answer. Here once again it is a data heavy kind of thing. See, National Family Health Survey, हमने देखा कि RBI के एग्जाम में भी बहुत सारे questions नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से आए थे. दैट इज व्हाई यू शुड रिमेंबर कि कितना इंपॉर्टेंट ये डेटा है, कितना इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और हम इसके बाकी के क्वेश्चंस भी अपने रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के सेशन के अंदर करने वाले हैं. सो डू नॉट वरी अबाउट इट.
For now, just tell me that what is the right answer, and I'm getting the right answers here. People are going with option number 2, and that is absolutely right. That is 59.1%. So 59.1% है. Here you can see for adolescent girls it was 59.1%. तो बाकी की चीजों को भी हम कर लेते हैं. That is under 5 years it was 67.1%. For the adolescent boys it was 31.1%. So you must be very thorough with such kind of things. और ये कैसे हो सकता है? This can be done only with the help of the revision. अगर आपने अच्छे से revision किया है, so that you will be able to bifurcate between such kind of data and you will be able to successfully mark the answers correctly in the exam. So I hope this is clear. Let's move on to the next question. So here tell me about this particular part. See, this question is about the anemia मुक्त भारत. अभी हमने पढ़ा anemic adolescent girls के बारे में, and now you are required to tell me कि anemia मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत you are required to just go through these particular statements and tell me that which of the following statements is or are not correct about the Anemia Mukt Bharat Abhiyan. See guys, once again you are required to identify the incorrect statement. See, kindly see here the keywords. The first keyword is the name of the flagship initiative of the Ministry of Health and Family Welfare, and second important thing is कि demand क्या है question की, that is which of the following statements are not correct. So here please tell me that what is the right answer. Kindly once again I am telling you that go through these particular statements. In particular statements में जाइए and then tell me that what is exactly the right answer to this particular question. So here you can see the very first statement says that it was launched in year 2018 in association with the United Nations Women. The second important thing, under this initiative, weekly iron and folic acid pink tablets for the children 5 to 9 years, blue tablet for the children 10 to 19 years are being provided. The third statement is talking about that 6x6x6 strategy with a focus on the children of 0 to 9 years, and the last statement is talking about the biannual deworming is carried out for the children of age group 1 to 19 years. So guys, what is the right answer? So here I am getting the right answers here. That is option number 1, and that is absolutely right. See here, you can see that here the launch year is 2018, and guys, when I talk about the initiative, it is basically the initiative of Ministry of Health, Family Welfare and the UNICEF, and not the UN Women. In the question it was mentioned that it is an initiative of the United Nations Women, and but this is not the initiative of the UN Women. Basically it is the initiative of UNICEF. That is what you should remember from the exam point of view. तो objective क्या है उसका? To reduce the prevalence of anemia all over India. India के अंदर anemia को हटाया जाए, eliminate किया जाए. That is what its objective is all about. So all these particular points we have already discussed in our question itself. Now let's move on to the next question, and the next question is on a very important survey, that is National Achievement Survey. See guys, once again tell me that what exactly are the following statements are correct about the National Achievement Survey. National Achievement Survey, तो इनमें से कौन सी वो स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है अबाउट द नेशनल अचीवमेंट सर्वे? दैट इज व्हाट यू शुड रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो प्लीज टेल मी क्विकली व्हाट इज द राइट आंसर हियर. Here in the very first statement it is talking about the aim. The second statement is talking about the implementation of the National Achievement Survey. Third statement is about the assessment framework and tools, कि किसने इसको डिजाइन किया है. इट इज बेसिकली एनसीईआरटी. द फोर्थ स्टेटमेंट इज आस्किंग अबाउट कि इसको बेसिकली कंडक्ट कौन करता है? दैट इज सीबीएसई. So guys, when I talk about the right answer to this particular question, absolutely right. Akash, Nilesh, Subhashmita, everybody is saying that option number 5 is the right answer. Absolutely right. Right answer is option 5. That is all of the above, as all these statements are correct. So Praki, Jalaj, Neha, Abhay Thakur, Sadashiv, everybody has answered the question correctly. Well done guys. Let's move on to the last question of our today's session, which is here on the screen. So now I want all of you to answer the question correctly. Please take your time and tell me that what is the right answer to this particular question. So the next question is that recently, April 2022, 2 Indian cities have been added to the Tree Cities of the World 2021 list. So please tell me that which one of the following statements are correct with respect to the Tree Cities of the World 2021 list. So here see, always remember that you are required to focus on the keywords. Here the keyword is
first of all the 3 cities of the world, and the second important thing is the demand of the question. The question is demanding you about the incorrect statement about this particular initiative. So guys, please tell me that which one of the following statements are incorrect. The very first statement is once again talking about that ki initiative kiska hai. The second part is about recognition of the cities. So the third part is about that it requires cities to set up a tree board for taking care of the trees in the municipal boundaries, and the fourth statement is talking about the Indian cities which has been selected in the list for year 2021. So please tell me what is the right answer. So Vidisha, everybody is saying Subhashmita, Krishnendra, Ace, Ayush, everybody is saying that option number 1 is the right answer. So that is absolutely right, guys. Here incorrect part is option number 1 only, because here what exactly is being mentioned incorrectly, that was UNCCD. In the respect of UNCCD, it must be United Nations FAO. That is what absolutely Akash ne diya is question ka sahi jawab, that is it should replace, it will be replaced by UNFAO. That is what is the right part. See guys, यहाँ पर आप देख सकते हो initiative है RBI Foundation का, ठीक है. Objective क्या है? To recognize cities and towns which are committed to ensure that the urban areas and trees are properly maintained and sustainably managed. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रूल्स कौन सेट करने वाला है. बट गाइस व्हेन आई टॉक अबाउट द करंट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट 2 Indian cities, that is Hyderabad and Mumbai, have been added to the 3 cities of the world 2021 list. That is what you should remember from the exam point of view. So guys, that was all from the today's session, and today once again we have tried to cover the top 50 MCQs from the top 50 topics from the month of April 2022. But guys, this is not the end. Once again I am telling you, now this is the time for all of you for your homework. See guys, now अब homework क्या है. See, और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए guys. The first of all is when I talk about the people who have enrolled with us with the gold package, what they can do as a part of their homework. The people who have enrolled for our this, here you can see that what you are required to do, you are just required to open the ESI and FM Current Affairs. ESI and FM Current Affairs पे जाइए अपने कोर्स के अंदर, and what you are required to do here, just open the Current Affairs magazine of the month of April 2022, and after reading out the Current Affairs magazine for the month of April, what you are required to do, you are required to attempt the ESI Current Affairs quiz. तो ESI Current Affairs quiz को attempt कीजिए. That is what is really very important from the exam point of view, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 50 क्वेश्चंस करने से काम नहीं चलने वाला है. You are also required to cover the other parts as well. Now the next important part, the people who are enrolled with the silver package, what they are required to do. जो silver package वाले students है उनको क्या करना है guys, once again they are required to go to the ESI and FM Current Affairs in the course. वहां पे जाके you are once again required to cover the ESI Current Affairs magazine, and after reading out the magazine you are required to cover the ESI Current Affairs quiz. क्योंकि जब आप क्विज करेंगे then you will basically get the idea कि कौन से एरियाज में आप लैग कर रहे हैं, कहां पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. And this analysis is really very important from the exam point of view. So Akash is saying that, sir, do we have to cover PIB sessions uploaded on the YouTube separately? Absolutely guys. See, PIB sessions को भी साइमल्टेनियसली कीजिए, क्योंकि वहां से आप जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वी कैन नॉट फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गाइस. उसके अंदर जो न्यूज आर्टिकल्स अपडेट होते हैं, जो कि गुरकीरत सर जिनके सेशंस ले रहे हैं, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कवर्ड. और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी को कल गुरकीरत सर ने भी बताया था, दैट वी हैव लॉन्च द क्रैश कोर्स. और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने किया है और जिन्होंने नहीं किया है, दे कैन ऑल्सो गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स. ओके, तो क्रैश कोर्स जिन्होंने किया है उनके लिए भी गाइस यही है कि आप ESI करंट अफेयर्स को कवर करें और उसके बाद वहां से अपने क्विजेस को भी अटेम्प्ट करें. ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया कि क्रैश कोर्स, गोल्ड कोर्स और सिल्वर पैकेज जिसके पास है उनको क्या करना है, और जो हमारे साथ एनरोल्ड नहीं है उनके लिए क्या है, वो जिस भी सोर्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वहां से अपनी सारे प्रिपरेशन करनी है खत्म. एंड यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फोकस एंड अटेम्प्ट द क्विजेस, बिकॉज क्विजेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे to remember and to analyze that what exactly you are required to do in order to complement your preparation to get it to the next level. ठीक है, I hope that this is very much clear guys. So this was all from the today's session, and I really believe that today's session was useful and fruitful to all of you. अब जिसकी जो queries है guys, please tell me
comment your queries in the comment section and I will be answering your queries. So SK Sadami saying that how beginners covers the syllabus. See guys, syllabus अगर आपको कवरना है तो टॉपिक वाइज यहाँ पर जाइए. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के ऊपर हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, ऋतिका मैम के बहुत सारे सेशंस हैं, तो उनको गो थ्रू कीजिए एंड फ्रॉम दोस पर्टिकुलर वीडियोस यू विल गेट द आइडिया दैट आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए अपनी और किस तरीके से क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. The next important query here is the EduTap ESI Current Affairs plus quiz plus mocks enough to clear phase 1. So guys, I really believe that all our team is really working hard in order to come up with the best of the bestest quality of the current affairs for all of you, and you all know the results about that as well. So I really believe कि अगर आप ये जो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, if you are covering that comprehensively, then definitely you are going to ace in this particular exam. So Kumar Shivam is saying that sir, can we edit the NABARD form? See, अगर आपने उसको properly submit कर दिया है, आपकी payment हो चुकी है, then it is not possible for you to edit it. But guys, for this particular part, what you can do, you can just once again share your query on the hello@edutap.co.in and we will try our best to come up with the solution for your this kind of problem. ठीक है. So now I think that there are no more queries with the people here. All your queries are being resolved and I really believe कि आप सभी की queries को मैंने clear कर दिया है. So still if you are having any query, please tell me. Otherwise we will be concluding this particular session. So now I am looking into the comment section that no more queries are there. So guys, thank you for joining us. Wish you all happy learning and all the best for your exam.